Hello everyone, welcome to the Manoeuvre Education. My name is Surya sir, and today in this particular video we'll talk about the TISS 2021, and that is about the step-by-step form filling process. So friends, जैसे कि आप जानते हो date are already out, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट कौन कौन से स्टेप्स है और आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसे करना चाहिए. ओके, टू अवॉइड ओवरऑल मिस्टेक्स, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में अगर मिस्टेक कर लोगे तो गाइस एग्जाम दे नहीं पाओगे, एडमिशन प्रोसेस के समय डिफिकल्टी फेस करोगे. तो इससे अच्छा यही है, वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो 1, 2, 3 और 5 टाइम्स एंड देन स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. Okay guys, so now we are on the official website. So this is the exam activity we already discussed in our previous video. Now let's click on how to apply section. Click here to visit the online application system. Okay, so application process के बारे में सारी details आपको जाननी है guys. So general instructions are mentioned over here. पहले आपको website go through कर लेनी है guys. Okay, all informations are mentioned here. Candidate expect to use the same email ID and password for the entire process till the completion of the admission process. जब तक आपका admission process complete ना हो, एक ही email ID and password होना चाहिए guys. Okay, these all are the respective details mentioned over here. Application fees, it is 1000 rupees for open category candidate, okay, and 250 plus bank charges for SC/ST candidate and SC/ST candidate those जिनकी family income 2.5 lakh से ज़्यादा है. Okay, so go through all these details first and thereafter start your form filling process. So click here to visit the online application system. So this is the login page. Okay, now you have to register here. So click here to register. Now enter your email ID, type the captcha here and register. Now it says you will receive an email with the subject TISS admission registration link in a short while. If the mail does not appear in the mail inbox, check email spam or junk folder. Click on the link in the email to complete the registration process. Okay guys, so अब आपको क्या करना है, very simple. Okay, just अपना mail open कर लो and then click on that particular link. जहाँ भी अगर inbox में नहीं मिल रहा है, okay, so you can find in the spam folder or junk folder. Okay, so here I received the mail from the TISS. Okay, now link mentioned here. The link will take you to the TISS online admission set password page. वहाँ आपको अपना password enter करना है. Where you have to create your password, enter your name. It appears in your 10th and 12th mark sheet and set the password. Okay, so click on this particular link. Now page will open. So email ID already mentioned हो चुका है यहाँ. Okay, enter your full name. Enter password, confirm the password, enter the captcha here and save. So it says congratulations, you have been registered. Please log in using your mail ID and password to continue to the home page. Again enter the captcha here and log in. Okay, now here we'll start the application process. Okay, process description, basic details. Enter your basic information such as the name, address, the examination center preferences, etc. Academic details, enter your academic details. आपको 10th और 12th मार्क्स एंटर करने हैं. That's it. अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो भी सारे मेंशन कर दिए गए. सेलेक्ट प्रोग्राम्स, आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं आइदर जयपुर कैंपस और द गुवाहाटी कैंपस एंड देन यू हैव टू पे द फीस. ओके, सो पेमेंट आप दो तरह से कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट एंड द कैश पेमेंट. अगर कैश पेमेंट करना है सो यू हैव टू टेक द चालान फ्रॉम द TISS इंस्टीट्यूट एंड देन SBI बैंक में जाकर आपको वो चालान सबमिट करना है. दैट्स इट. नाउ सो गो टू ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. Now it says basic details pending. Okay, so click over edit or view. So now full name already submitted, gender, date of birth. Okay, date of birth select हो चुकी है, mail ID already entered, parents, spouse, guardians, total annual income. So enter the income here. Are you eligible for any reservation? Select yes or no. Okay, according to your category. अगर आप SC, ST, OBC, EWS or the denotified tribe से belong करते हो, then you have to select yes over here. Okay, so you have to fill all these details here. Contact details, आपका parents का नाम. Okay, thereafter relation of parent, residential address, pin code, country, state, city. Okay, then domicile. अब आप domicile कहाँ से हो? You belong to Maharashtra state, then you have to select the Maharashtra here or the respective state. Okay, mobile number. Now guys, mobile number भी आपको change नहीं करना है throughout the admission process because you will get OTP and again you will get the messages on that particular number. So email address, password and mobile number ये तो change करना ही नहीं है आपको. Okay, now enter your mobile number here. Parents mobile number, parents or guardian mail address. Now save the details. Okay, so data saved successfully. Now click on the next. Now we have to fill all the academic details. So this is step 2.
Okay, after completing or making any further changes, click on save button और your data will not be saved. Okay, so आपको save बटन पे क्लिक करते रहना है. जो भी next step है, जैसे अब यहाँ save details नहीं करोगे then वो save नहीं होने वाली. So save details and then next जो कि यहाँ mention किया गया होगा. Okay, now have you passed 12th standard? Yes or no, select accordingly. If you have not passed 12th standard, will you be completing before June 2021? So अब यहाँ कुछ mention कर ही नहीं सकते and ऑलरेडी 12th आपका हो चुका है, रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं. सो कोई भी यहाँ अपीयरिंग सेक्शन वाला नहीं होगा. ओके, कोई भी ऐसा नहीं पूछेगा कि 12th का रिजल्ट आया नहीं है, अपीयरिंग कर सकता हो क्या. यहाँ आपको अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए है ही नहीं और यहाँ आप एंटर कुछ कर नहीं सकते. ओके, सो प्लीज सेलेक्ट योर स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिससे भी हो आप, अदर्स यू कैन सेलेक्ट. ओके, नाउ सेव डिटेल्स. सो डिटेल्स हैज बीन सेव्ड. नाउ नेक्स्ट वन, if you have not passed 12th standard, will you be completing before June 2021? Oh yes, यहाँ आप details आ चुकी है, you have to select yes. Okay, now save details. So details have been saved. Details of marks code. Okay, so standard you have to select. So first 10 standard. Okay, select standard, then marks grade obtain. जो भी marks आपको मिलेगा guys, you have to enter that mark. Then maximum marks क्या थे? So out of 600, year of passing. अब pass आपने कब किया है? Okay, so select the year accordingly, percentage mark, save mark details. Okay, now details added successfully. Okay, now 12th standard details. आपने 10th की details enter कर ली है, अब आपको करनी है 12th standard की details. So have you passed 12th standard? Yes, ये तो already submit हो चुके हैं. Save details, details of marks code. आप 11th के भी marks यहाँ enter कर सकते हो. Okay, now 11th marks, maximum marks, year of passing, save mark details. Okay, details saved successfully. Okay, now standard 12th marks grade obtained, maximum marks, details added successfully. Okay, so all details have been successfully submitted. अब यहाँ आप देख सकते हो your academic details. यहाँ मुझे सारी details दिख रही है. Now if I want to delete anyone, मैं यहाँ डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ. ओके, अगेन यू कैन एंटर दैट पर्टिकुलर डिटेल्स. ओके, नाउ सेव डिटेल्स. ऑल डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड. नेक्स्ट वन, नाउ यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. सो फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स: जेपीजी, जेपीईजी, एक्सपीएनजी, पीजेपीईजी. ये जो भी सारे फॉर्मेट्स दिए इसी में होना चाहिए. द साइज ऑफ द ईच फाइल शुड नॉट एक्सीड 2 MB. सिग्नेचर 2 MB से एक्सीड नहीं होना चाहिए और फोटो भी 2 MB से एक्सीड नहीं होना चाहिए. ओके गाइज, प्लीज फॉलो ऑल दीज स्टेप्स लिस्टेड बिलो टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. अब आपको कैसे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, ये सारे स्टेप्स यहाँ दिखाई गई है. ओके गाइज, रिसाइज योर फोटो और सिग्नेचर, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो. रिसाइज योर डॉक्यूमेंट, यू कैन क्लिक ओवर हियर. ओके, नाउ लेट्स अपलोड द फोटोग्राफ फर्स्ट. सो अटैचमेंट टाइप, आई हैव सेलेक्टेड फोटोग्राफ हियर. ब्राउज एंड अपलोड फाइल, क्लिक ओवर चूज फाइल. ओके, एंड अपलोड फाइल. तो इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देन मैंने उसे अपलोड कर लिया है. ओके, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड. प्लीज चेक द टेबल बिलो. स्क्रॉल डाउन करना है. ओके, सो यहाँ मेंशन आ गया है फोटोग्राफ, इमेज, फॉर्मेट भी आ गया है. व्यू फाइल आप क्लिक करके देख सकते हो. रिमूव फाइल करना है तो आप रिमूव कर सकते हो. ओके, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द सिग्नेचर हियर, चूज फाइल एंड अपलोड. ओके, सो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है. नाउ सेव द डॉक्यूमेंट्स. डेटा सेव्ड सक्सेसफुली. ओके, नेक्स्ट वन, program details. You can apply for only one program. Please verify all the details in application form by clicking on the application preview button. Once you confirm all the details are correct, click the final confirmation button. Please note that once you confirm, यही हमें सुनने मिलता है, you can't edit. Okay, you will not be able to modify any data in the application form. So make sure आप सारी details correct enter कर रहे हो. Select program. BA in Social Sciences Tuljapur off campus. BA in social work with specialization in rural development from Tuljapur campus, or BA in social sciences Guwahati off campus. Okay, so select any one program. So मैं यहाँ select कर रहा हूँ तुलजापुर social science courses. Add program campus location हो चुका है, यहाँ campus का नाम आ चुका है. Okay, and now I have to click over application preview. Okay, so ये मेरा application form हो गया. My name is mentioned here, email ID is mentioned over here, basic details, photo क्लियर हो चुका है, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है. ओके, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लो गाइस. ओके, एकेडमिक डिटेल्स, ओके, प्रोग्राम डिटेल्स, एंड नाउ क्लिक ओवर फाइनल कंफर्मेशन. तो आर यू
sure you do not want to change any details in the application, if okay, will not be able to modify further. अब आगे चेंज नहीं कर सकते. So make sure यहाँ कैंसिल कर लो, सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लो, नहीं हो रहा है बैक कर लो, सारे डिटेल्स एक बार वापस फिलअप कर लो, एंड देन क्लिक ओवर नेक्स्ट. And then the final stage is nothing but proceed for the payment gateway. Okay, so select the payment gateway according to you and then do the payment of 1000 rupees for general category, 250 for SC/ST category and 500 for ST/ST जिनकी gross income 2.5 lakh से ज्यादा है. Okay, now select the payment gateway, credit card, debit card, net banking, wallets and more, and then pay 1000 rupees. So that's it guys. स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, काफी सिंपल प्रोसेस है लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होती रहती है. डोंट रिपीट एनी मिस्टेक्स इन द फॉर्म फिलिंग, हमें मिस्टेक्स नहीं चाहिए. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड. एक बार नहीं, 2 बार नहीं गाइस, 5 बार देख लो एंड देन स्टार्ट योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. वेरी बेसिक, वेरी सिंपल प्रोसेस इज देयर. 10th 11th एंड 12th के मार्क्स एंटर करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है. वन प्रोग्राम यू हैव टू चूज फ्रॉम द कैंपस एंड दैट्स इट. ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो. नाउ इफ फॉर प्रिपरेशन you can visit our website manoeuvre.com/TISS entrance. So for all exam updates and the notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So if you have any doubts, guys, ask me in the below comment section and we'll try to answer all of your queries. So that's it. All the best for your preparation. See you in the next video.